क्वेश्चन 763 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 763 क्या पूछ रहे हैं लोग? एक मिनट। के डर्माटोफाइट्स आर डर्माटोफाइट्स आर ऑप्शन 1 ट्राइकोफाइटन रूब्रम, ट्राइकोफाइटन रूब्रम। ऑप्शन 2 टीनिया वर्सिकेंस, टीनिया वर्सिकुलरिस, वर्सिकुलरिस। ऑप्शन 3 स्पोरोथ्रिक्स, स्पोरोथ्रिक्स। ऑप्शन 4 माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरिडियम, स्पोरिडियम। And the right answer is A, Trichophyton rubrum. Dermatophytes, Trichophyton rubrum. Question 764 देखेंगे। 764 Genodermal disease that can cause skin malignancy are Genodermal disease causing malignancy. Option 1 Xeroderma pigmentosa, Xeroderma pigmentosa. Option 2 neurofibromatosis, Option 3 actinic keratosis, ये ऑप्शन 4 porphyria cutaneous tarda। फिर से देखिए, जीनोडर्मल डिजीज कॉजिंग मैलिग्नेंसी, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एक्टिनिक केराटोसिस, पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। राइट आंसर इज ए, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। क्वेश्चन 765 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 765 क्या पूछ रहे हैं? द फॉलोइंग आर द साइकेट्रिक सिक्वेले आफ्टर स्ट्रोक इन एल्डरली। साइकेट्रिक सिक्वेले आफ्टर स्ट्रोक in elderly क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 डिप्रेशन, ऑप्शन 2 पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या ऑप्शन 3 डिमेंशिया, एंड द राइट आंसर इज ए एंड सी, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। क्वेश्चन 766 देखेंगे। क्वेश्चन 766 क्या पूछ रहे हैं? ट्रू अबाउट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन 1 commonly seen in females, most common in females. Option 2 recovery is complete after treatment, Option 3 associated with hypothyroidism, Option 4 family history of major depression, and the right answer is A and D, most commonly seen in females and family history of major depression. Question 767 देख रहे हैं। 767 drug treatment for schizophrenia are Option 1 chlordiazepoxide, Option 2 trifluperazine, Option 3 clozapine, Option 4 rivastigmine, Option 5 haloperidol, and the right answer is B, C and E. B, C and E, trifluperazine, clozapine and haloperidol. क्वेश्चन 768 देखेंगे। 768 क्या पूछ रहे हैं? कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आर ऑप्शन 1 इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन,
intellectualization. Option 2, depersonalization. Depersonalization. Option 3, dementia. Dementia. Option 4, delirium. Delirium. Say cognitive disorders are intellectualization, depersonalization, dementia, delirium. That answer is C and D. Dementia, delirium. Dementia, delirium. Question 769 देखेंगे. 769, true about statement about obsession. True about obsession. क्या क्या? Option 1, it is the repetitive thought or image. It is repetitive thought or image. Image. Option 2, the patient thought that the image or thoughts are imposed by other. Imposed by other. Option 3, content about sex or God. Content about sex or God. Option 4, the patient get disturbed when unable to remove the idea or thought. तो बोल रहा है कि the patient get disturbed if can't remove thought. If can't remove thought. And the right answer is A, C and D. A, C and D. Repetitive thought or image, content about sex or God are disturbed if can't remove the thought. Question 770 देख रहे हैं. Question 770 क्या बोल रहे हैं? Following are included in dissociative disorder. तो included in dissociative disorder. Included in dissociative disorder. Option 1, multiple personality disorder. Multiple personality disorder. Option 2, fugue. Option 3, hypochondriasis. Option 4, somatization disorder. Including dissociative disorder, multiple personality disorder, fugue, hypochondriasis या somatization disorder. And answer is A and B. Multiple personality disorder and fugue. Multiple personality disorder and fugue. Question 771 देख रहे हैं कि treatment of dendritic ulcer. Treatment of dendritic ulcer क्या होती है? Option 1, acyclovir. Option 2, edoxuridine. Option 3, steroid. Option 4, tetracycline. Option 5, trichophyton canis. फिर से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डेंड्रिटिक अल्सर, एसाइक्लोविर, इडॉक्सुरिडिन, स्टेरॉइड, टेट्रासाइक्लिन, ट्राइकोफाइटोन कैनिस. एंड द राइट आंसर इज ए एंड बी. एसाइक्लोविर एंड इडॉक्सुरिडिन. क्वेश्चन 772 क्या पूछे यहाँ पे? स्नो बॉल ओपेसिटी इन विट्रस सीनिन. स्नो बॉल opacity in vitreous is seen in. Option 1, pars planitis. Option 2, sarcoidosis. Option 3, juvenile rheumatoid arthritis. Option 4, toxoplasmosis. Option 5, fush lesion. फिर देखिए, स्नो बॉल ओपेसिटी इन विट्रस सीनिन, पार्स प्लेनाइटिस, sarcoidosis, juvenile rheumatoid arthritis, toxoplasmosis या fush lesion. Right answer is A and B. Pars planitis and sarcoidosis. Question number 773. Diabetic retinopathy treated by. Diabetic retinopathy treatment. Option 1,
strict glycemic control. Strict glycemic control. Option 2, pan photocoagulation. Pan photocoagulation. Option 3, antihypertensive. Antihypertensive. Option 4, antioxidant. Antioxidant. Option 5, cyclophotocoagulation. Cyclophotocoagulation. Diabetic retinopathy treatment. Strict glycemic control, pan photocoagulation, antihypertensive, antioxidant, cyclophotocoagulation. The right answer is A, B, C, D. A, B, C and D. Strict glycemic control, pan photocoagulation, antihypertensive and antioxidant. क्वेश्चन 774 देखेंगे. क्वेश्चन 774 क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटीरियोवाइटिस ऑफ ए यंग बॉय आर. इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटीरियर uveitis of young boy. Option 1, HLA-B27. HLA-B27. Option 2, X-ray sacroiliac joint. X-ray SI joint. Option 3, torch agent. Option 4, ELISA for HIV. Option 5, ultrasound abdomen. एक मिनट, ultrasound abdomen. फिर से देखिए, investigation of anti-uveitis of young boy, HLA-B27, X-ray SI joint, torch agent, ELISA for HIV and ultrasound to abdomen. And the right answer is A, B, C, D. A, B, C, D. HLA-B27, X-ray SI joint, torch agent and ELISA for HIV. क्वेश्चन 775 देखेंगे. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 775 क्या पूछे यहाँ पे? herpes zoster ophthalmicus predictor of. herpes zoster ophthalmicus is predictor of. Option 1, leukemia. Option 2, lymphoma. Option 3, HIV. Option 4, disseminated TB. Option 5, metastasis. Herpes zoster ophthalmicus is predictor of leukemia, lymphoma, HIV, disseminated TB, metastasis. Right answer is all of the above. ठीक है ना? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, HIV, डिसेटेड टीबी एंड मेटास्टेसिस. क्वेश्चन नंबर 776 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 776, होमोनिमस हेमिएनोपिया सीन इन लेशन ऑफ. होमोनिमस हेमिएनोपिया सीन इन लेशन ऑफ. ऑप्शन 1, ऑप्टिक ट्रैक्ट. Option 2, optic chiasma. Option 3, optic radiation. Option 4, optic nerve. Option 5, occipital cortex. The right answer is optic tract, optic radiation and occipital cortex. Optic tract, optic radiation, occipital cortex. क्वेश्चन 777 देखेंगे. 777 पूछे ophthalmia neonatum caused by. Ophthalmia neonatorum is caused by. Option 1, gonorrhea. Option 2, H. influenza. Option 3, chlamydia. Option 4, pseudomonas. Option 5, staph aureus. Physical ophthalmia neonatum caused by gonorrhea, H. influenza, chlamydia, pseudomonas, staph aureus. The right answer is A, C and E.
A, C, and E. Gonorrhea, chlamydia, and staph aureus. Ophthalmia neonatum caused by gonorrhea, chlamydia, and staph aureus.